Hello everyone, welcome to Ansarkari. In this video, we'll be starting with number systems. And as an introduction, in Hindu Arabic system, we use 10 symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 called digits to represent any number. So basically, these are all the numerals with which we represent the numbers. This is the decimal system where we use the numbers 0 to 9 and 0 is called insignificant digit, whereas 1, 2, 3, 4, and so on are called the significant digits. This is basically the basic information about numbers. Then we have a group of figures denoting a number is called a numeral. For a given numeral, we start from the extreme right as units place, tens place, hundred place, and so on. We represent the number this as shown below. So this is the very basic information about numbers, which says that 6 here is the units digit, which is 10 raised to the power 0, which automatically becomes equal to 1. Then we have the tens place, which is denoted by 10, then 100 by 100, and thousands place. We read it as 30 crores 98 lakhs 72,546. Now in this numeral, this part can be a bit important, place value and face value. Face value of a digit in a number is the value itself wherever it may be. So digit is like 0, 1, 2 till 9. These are all digits. But for example, 2 is also a number and 219 is also a number. But the digits in 219 are 2, 1, 9. This is the difference between digits and numbers. So face value is basically the digit itself. For example, face value of 1 in this number 219 will be 1 itself. Face is which is actually there, right? But place can differ. For example, here 1 has tens place. So it will be 10 into 1. This will be the place value of 1 here. But if we take the number 1000, here the place value of 1 will be 1000 itself. So this is the difference between place value and face value. This is also given here by this example. Now number system, when we focus on natural numbers, counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, so on till infinity are known as natural numbers. So natural numbers do not consist of 0 and the negative numbers. Natural numbers में ये दोनों numbers नहीं होते. Natural number only consists of the positive numbers from 1 to infinity. Now the set of all natural numbers can be represented by n is equal to, and this is the set given here, like starting from 1 till infinity. Now whole numbers. If we include 0 among the natural numbers, so whole numbers is equal to 0 plus the natural numbers. तो whole में जैसे कि O आ रहा है तो O we can just for the sake of remembering we can think O and then 0 we can relate it so that we don't forget. So whole numbers will be equal to the set will be equal to 0 till infinity. Clearly every natural number is a whole number but 0 is a whole number which is not a natural number. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स तो ये रॉन्ग होएगा, लेकिन अगर हम बोले कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स तो ये स्टेटमेंट ट्रू होएगा. Integers. In case of integers, all counting numbers and their negatives including 0 are known as integers. So 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही 0 पॉजिटिव होता है. 0 is neither negative nor positive. The set of integers can be represented by z or I. So integers basically includes all the negative numbers, then we have 0 and then we have all the positive numbers. Now positive integers, this can be shown by like starting from 1 till infinity. These are all positive integers. And the negative integers start from -1 again till infinity, like till the left side of the number line. These are all negative integers. Now non-negative and non-positive 0. For example, अगर हम बोले कि
नॉन पॉजिटिव कौन से हैं? तो नॉन पॉजिटिव में विल इंक्लूड 0 and then -1, -2, so on till infinity. But in case of non-negative अगर हम देखें तो again 0 will be included because 0 is also not non-negative and non-positive. And then again 1, 2, 3 till infinity. जितने भी numbers हमारे पास possible है. Rational numbers. The numbers of the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers. For example these. अब जो p और q अब rational number की condition क्या होती है कि कोई भी like इस form में होना चाहिए number. लेकिन इसमें दो conditions है कि एक तो जो p और q है उनको integers होना चाहिए, integers के अलावा वो कुछ नहीं हो सकते हैं. एंड सेकेंडली जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए बिकॉज जैसे डिनोमिनेटर जीरो होता है द नंबर बिकम्स नॉट डिफाइंड. तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए एक नंबर के रैशनल नंबर होने के लिए. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. Complex numbers, real numbers and imaginary numbers. Now complex numbers are divided into two categories, that is real numbers and then we have imaginary numbers. In case of real, imaginary numbers are like root -1, तो ये तो हो गई imaginary numbers. बाकी जितने भी होते हैं वो सारे real numbers होते हैं. इनके अंदर भी दो classifications है. For example, rational and irrational. Irrational के case में we have non-terminating, non-repeating and p upon q form where q is not equal to 0 and at least one of p and q is not an integer. यानी कि कोई भी ऐसा या तो न्यूमिनेटर यानी कि p या फिर डिनोमिनेटर इनमें से एटलीस्ट कोई भी एक दोनों भी हो सकते हैं कि वो ना हो इंटीजर. वेराज रैशनल नंबर में क्या कंडीशन थी कि दोनों को इंटीजर्स होना नेसेसरी है. तो इन दिस केस अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जो कि इरैशनल होएगा जो कि इंटीजर नहीं होएगा तो उस केस में ये जो नंबर है ये पूरा भी इरैशनल माना जाएगा. नाउ इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स वी हैव टू टाइप्स लाइक p अपॉन q फॉर्म और एक डेसिमल फॉर्म की हम बात करते हैं. तो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो टर्मिनेटिंग भी रैशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल है टिल द टाइम इट इज गेटिंग रिपीटेड. अब रिपीटेड का केस कैसे होता है? फॉर एग्जांपल 0.010101 ये जो केस है ये रिपीटेशन का केस है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि ये एंड नहीं हो रहा है लेकिन इसमें रिपीटेशन का हमें केस दिख रहा है तो ये भी रैशनल हो जाएगा. एंड टर्मिनेटिंग इज विच टर्मिनेट्स जो एंड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमें दिए हुए हैं. सो फ्रॉम दीज वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया फॉर एग्जाम्पल 009 0.009 then again we have 0009 then 00009. तो ये जो हम कंटिन्यू होएगा ये ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है. जो पैटर्न है वो बदल रहा है राइट. तो यहाँ पे हम बार का यूज भी नहीं कर सकते इस वजह से ये इरैशनल माना जाता है. नाउ इंटीजर्स की एग्जांपल जो है द नेगेटिव होल नंबर्स ये हमने अभी पढ़ा एंड जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव वी शुड रिमेंबर दिस. देन इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जिनका एटलीस्ट एक डिवाइजर होता है 1 के अलावा एंड द नंबर इटसेल्फ. तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए. देन प्राइम नंबर्स वी ऑल नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से उनके अलावा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर्स कह देते हैं. तो these are all the examples and then we have one which is neither prime nor composite again. तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस हम याद रख सकते हैं 0 का केस और 1 का केस.